made a financial service application or a investment application, so you need a real-time responder, need do lot of analysis. So one is another is the fraud detection. I told you you can also create some agent who can do the entire tasks before giving you. This is the company, and this stocks was really going significantly up. And at that time, I told you I'm not confident in this stock because the parameters is already the stocks is negative at that time. So if you see over here, कुछ हुआ था उस टाइम में. So this is I don't have that kind of a अभी data नहीं है उसमें recently published हुआ था and the stocks is gone. जैसे Gansol में हुआ था. You remember? गैंसोल इंजीनियरिंग में व्हाट देयर प्रोमोटर डन, ऐसे प्रोमोटर ने खतरनाक काम किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं. अरे गैंसोल इंजीनियरिंग पूरा पैसा ये दे पुल आउट द मनी एंड देन दे आर बाइंग देयर ओन पर्सनल यूज. ऐसे ऐसे कंपनी में बैंकिंग फ्रॉड में, बैंकिंग में जैसे यस बैंक इज द इंटर फ्रॉड, वो बैंकिंग में वो पूरा फ्रॉड हो रहा है. ठीक है, वो प्रोमोटर लेवल से. और अगर बैंकिंग में एक दो एम्प्लॉय फ्रॉड किया है, द कंपनी इज एन एथिकल, द बैंक इज एथिकल, बट इट इज डन बाय सम ऑफ द, वो तो ऑपरेशन लेवल में फ्रॉड हुआ है. कंपनी का इज मोटिव नॉट टू चीट एम्प्लॉय, बट द सम एम्प्लॉय हैज डन दैट. ओके, तो उसमें आपको फॉरेंसिक में नेगेटिव ज्यादा नहीं आएगा. बट ये देखो, ये कंपनी में अभी एग्जांपल देखा रहा हूँ. लेट्स से आई विल गोइंग टू यूज दिस, आई विल टेक द डेटा. ये रिसेंट डेटा में आपको ऐसे देना है. You can use this entire part with the help of agentic AI. Take the same thing. मैं screenshot ले रहा हूँ to balance it. Take this one. Your cash flow statement. I'm going to do. I'm going to take this screenshot as well, and then I'm going to put the put it over here. Now, what I'm going to do, I'm going to use forensic. We have updated some of them based on the model. So we're going to give it to you the latest one. So it will going to look at the entire analysis of your accounting number and try to figure out the rate flag. अगर कंपनी में कोई भी रेट फ्लैग है, it will going to figure it out. ठीक है, सो ऐसे कंपनी नहीं चाहिए जो कंपनी में प्रोमोटर लेवल से, मतलब ऊपर से ही आइडिया है टू मैनिपुलेट शेयर होल्डर. ऐसे कंपनी मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेट्स से अगर कंपनी में लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई फ्रॉड हो गया इंटरनल में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज द बेस्ट टाइम यू कैन बाय दैट स्टॉक बिकॉज यू आर गेटिंग एट ए डिस्काउंट. क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इट्स बैंकिंग सेक्टर, some of the fraud may happen, but if it is not a big fraud like bearing bank जैसा केस नहीं हो जाए. bearing bank, how many of you remember bearing bank case? रिस्क मैनेजमेंट में हुआ था. तो इंटर बैंक was collapsed and only sold by $1, £1. तो ऐसे हालत का वो अगर होगा तो प्रॉब्लमेटिक है. सो इफ यू लुक एट दिस, it given a 4 out of 100, means the 4 out of 10 is a very very low rating. I know a lot of people know this. You have using this one. So if you see over here, this is a high risk flag, and you should not be investing in this stock until unless it goes above 7. Do not try to invest in this stock. Now, with the help of this, you can see these are the critical red flag you don't want to invest this. Now, you can integrate this one with the forensic AI. Now you can also do the second cross validation. Now this is called cross validation. So once it is done, now you again wanted to validate between the cash flow, balance sheet, and profit and loss account. So let validate again. Cross validation I have given. So it is taking some validation again. So let process. So ये problem में आपको थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि ये little complicated one. So again it is processing so that ये दोबारा चेक कर रहा है एवरी नंबर में. अगर पहले वाला प्रॉब्लम में कुछ भी मिस्टेक है, दिस विल गोइंग टू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई दिस. सो दिस विल गोइंग टू टेक लिटिल टाइम कंपेयर टू द प्रीवियस वन. वेट करो, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें क्योंकि ये पूरा एनालिसिस फंडामेंटल टेक्निकल मीन्स लाइक पूरा फंडामेंटल में तीनों अकाउंट का नंबर चेक करना है और 10 10 years का. इट विल टेक सम टाइम. Now, this is already they have given you
some of the critical risks, and then this close. And it is a high risk you already seen, and it has given a lot of things. Even cross verification में number or number कर दिया है. Now you can see this is not a right investment. Now even in number or ये हो गया. And then you can also ask for a final report. So this inter risk management can be your another AI agent, which will going to be part of agentic AI. Okay, understood? Okay. Now this is the technical architecture. So you can use any llama grok use कर सकते हो इसमें. You can also use chat gpt, gemini also use कर सकते हो. Now you can you have four. So one is the research engine, another is the stock analysis engine. There are a lot of things you can four dimension you can analyze. Okay.